Hello everyone and very good evening. I hope you all are keeping well. I'm also good. And today in the class, I will be using more English because today classes are merged, basically both of Hyderabad and Pune region. So keeping in mind students from Pune region, I will be, more using English. But we will we will be getting it mixed, but still more English. That is why. So today in the class, what we are going to do, we are going to pick thermodynamics. I will just give you a snapshot of whatever things we have studied in thermodynamics. A snapshot meaning I will let you know concepts that are important, formulas that are important, and then we will solve previous year questions. Okay? So this is a revision session basically, and today in the class we are going to revise thermodynamics. But before I move on with this topic, in the previous class I was discussing unit and dimension questions, right? And this was the one question where we got stuck. I mean, answer given was 5% and I was getting 3%. So where we did the mistake. That is why I've included here this question. So let me take you through this again. If you remember, if you were there in the class, you must be having memory of this. But even if not, let's read the question carefully. I will explain where we did wrong and what we need to correct. Okay? So to find the spring constant of a spring experimentally, what we did, एक student ने experiment किया and a student commits 2% positive error in the measurement of time. So in the measurement of time, that is in the question it is given delta t by t into 100. This is equal to how much? 2%. Okay, and measurement and 1% negative error in measurement of mass. In the measurement of mass, there is given negative error, and that is 1%. Okay, percentage error in determining value of k. So what I did is time period का formula हमें पता है, we have studied कितना होता है 2 pi root under m by k. So we have simply put in the formula here, and if you're going to a square on the both side, यहाँ पे okay, not I didn't do the square. Simply I have written the power over here. So k ka power half is equal to 2 pi m ka power half t. And then we will use the concept क्या है कि कोई भी चीज power raised होता है, then how we write its how we add their error. So in that case we add relative error raised to the power, whatever power is given. So यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आप, तो डेल्टा k by k किसके बराबर होगा? डेल्टा k by k is going to be equal to डेल्टा m by m, क्योंकि यहाँ पे हमने कर दिया इसको स्क्वायर. सो अगर आपने इसको स्क्वायर कर दिया, दिस विल बिकम k and this will become 4 pi square m by t. So if you are going to calculate delta k by k, this will be equal to delta m by m plus 2 डेल्टा टी बाई टी, क्योंकि अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, सो दिस डन है. Now what is given in the question, delta m by m is given 2%, so I have written here 2%, but negative error of 1% was given in the mass, and that is why I wrote here -1%. ठीक है, and that is why the calculation was coming as 3%. Here I cannot write -1%. क्यों? मैंने क्या गलती किया यहाँ पे? मैंने गलती ये किया कि लाइक जब मैं तुम लोगों को रिवीजन करवा रही थी, देन ऑल्सो आई सेड कि एरर को हम हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं. जैसे टाइम पीरियड अगर यहाँ से निकालोगे तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ से अगर के निकालते हो तो कुछ वैल्यू आएगा. अब उस वैल्यू में एरर कितना है, वो एरर हर इंडिविजुअल क्वांटिटीज के एरर का समेशन होता है. ठीक है, सो यहाँ पे सारे इंडिविजुअल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर का समेशन होगा. सो मास का रिलेटिव एरर दिस, टाइम का रिलेटिव एरर दिस, रेज टू द वट एवर पावर इज गिवन. सो दिस इज दिस, वी नीड टू एड इट हियर. इवन if पावर गिवन इज नेगेटिव, वी नीड टू एड इट. मैंने नेगेटिव इसलिए लिख दिया था क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में जब तुम लोग पढ़ोगे ना, तो वहां पे जब नेगेटिव एरर होता है तो वी राइट इट नेगेटिव. वी यूज द साइन एक्चुअली. यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वी आर सिंपली नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेशन और एनीथिंग. हियर सिंपली टाइम पीरियड दिया हुआ है, के में रिलेटिव एरर बताना है. तो के का रिलेटिव एरर क्या होगा? इंडिविजुअल क्वांटिटीज के रिलेटिव एरर का समेशन.
So we have to add it, we cannot subtract it. And that is why here -1 जो मैंने लिखा ना वो गलत किया था. So we need to add it. यहाँ पे आप प्लस करोगे. So this will become how much? 5%. So this is the correct answer that we will be getting. I'm sorry for that day. मुझे आंसर आया नहीं था, so I said you कि I will check and then let you know. So today I did this. ठीक है. चलो, thank you for this. I mean, thank you for the understanding. It happens sometimes in the class we miss on certain things, or certain things simply escapes from our mind, है ना? It happens. आज की क्लास का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रिवीजन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. आई विल टॉक अबाउट ओनली वन क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज कर रहे हैं. एंड देन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में. ये हमारा क्या है? ये बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में. ठीक है. ये किसकी बात करता है? एनर्जी के कंजर्वेशन का. तो फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा हो, आई मीन मैंने ही पढ़ाया है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम का मतलब हो सकता है इसके अंदर गैस हो, ठीक है, एंड यू आर गिविंग इट सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, लेट्स से क्यू अमाउंट ऑफ हीट यू आर गिविंग इट. सो ये सिस्टम क्या कर सकता है? उस एनर्जी को लेकर काम कर सकता है ना, वर्क कर सकता है, या फिर वो अपनी एनर्जी को खुद बढ़ा सकता है. सो टू थिंग्स इट कैन डू. फर्स्ट इज इट कैन डू वर्क, एंड सेकेंड इज इट कैन यूज अ पोर्शन ऑफ दैट एनर्जी to increase its own energy. The way we eat something, when we eat something, some of that gets stored in form of glycogen or something, and other it gets used to do work, right? Similar thing is happening over here. So q को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी. So whatever heat you are giving, that is equal to work done plus delta U. Now coming back to sign convention, Q को हम sign convention क्या लेते हैं? If you are giving heat to the system, for example in this case, then Q is positive. When system is releasing heat, heat जब system से बाहर आ रहा है, then its sign convention will be negative. Now what is the sign convention for work done? So when you are doing work on the system, ठीक है, that is negative. डन है. यानी कि अगर हमारे पास एक गैसियस सिस्टम है, ओके, जेएनवी जूनागढ़, व्हाट हैपेंड? व्हाई यू पीपल आर लिविंग द क्लास? एनीथिंग इमरजेंसी? एनीवे यू कैन लेट मी नो. सो वर्क डन का कन्वेंशन क्या होगा? जैसे यहाँ पे ले लो गैसियस सिस्टम. if you are doing work on it, that is if you are compressing it, then work done on the system is negative. And when system is doing work, that is it is expanding, then work done is positive. So in physics, work done by the system is positive, work done on the system is negative. कमिंग बैक टू डेल्टा यू. डेल्टा यू के बारे में हम पढ़ चुके हैं. दिस इज इंटरनल एनर्जी. इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है? एनसीवी डेल्टा टी. प्रोसेस चाहे जो भी हो, इंटरनल एनर्जी को हम हमेशा कैसे लिख सकते हैं? एनसीवी डेल्टा टी के फॉर्म में लिख सकते हैं. नाउ दिस इंटरनल एनर्जी इज अ पाथ फंक्शन, सॉरी, स्टेट फंक्शन. दिस इज व्हाट? दिस इज योर स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन का मतलब, इसको इससे मतलब नहीं है कि कौन से रास्ते से सिस्टम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जा रहा है. सिंपल इसको मतलब है कि वो कौन से पॉइंट्स पे है, रास्ते से मतलब नहीं है. सो दिस इज स्टेट फंक्शन. वर्क डन इज व्हाट? वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन. डन. सो दैट वी विल डिस्कवर वन बाय वन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास जो आता है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? ये क्या होता है? So generally we indicate it by letter C, and this is written as what? Heat given per unit mole per unit temperature, right? So this is C. और हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जब पढ़ते हैं तो वी टॉक अबाउट टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज इन टर्म्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. एक है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. इन दोनों का क्या मतलब है? पहला का मतलब ये है कि तुम्हारे पास एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम तुमने फिक्स कर दिया. वॉल्यूम क्या है? फिक्स है. एंड देन यू आर गिविंग इट हीट. ठीक है. इन दैट केस सीवी, सी इज रिटन एज सीवी, एंड दैट इज डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी. तो इट मीन्स कि वॉल्यूम को आप कांस्टेंट रख रहे हो, एंड देन यू आर गिविंग हीट.
डन है। सीपी का मतलब क्या हुआ कि यू आर गिविंग हीट टू द सिस्टम, वॉल्यूम चेंज कर सकता है। सो सीपी इज व्हाट, हीट बीइंग गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी एंड सीपी हमने इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी या फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा है। वी हैव लर्न कि सीवी सीवी को कैसे लिखते हैं, मोनो एटॉमिक। अगेन इस डिस्कशन का ये पार्ट नहीं है, सो आई विल स्केप इट हियर। सो सीवी एंड सीपी, दिस थिंग शुड बी क्लियर। अब देखो यहाँ से ही तुम्हें क्लियर क्लियर पता चल जाएगा कि सीवी बड़ा होता है या सीपी। ऐसे तो हम पढ़ चुके हैं, सीपी माइनस सीवी क्या होता है, आर होता है। तो सीपी इज इक्वल टू वॉट, सीवी प्लस आर। So definitely, CP is what, greater than CV. I have explained it in normal class जब मैं पढ़ा रही थी। एक्सपेरिमेंटली मैंने एक्सप्लेन किया था कि CP एक्चुअली बड़ा क्यों होता है, और मैथमेटिकली यहाँ से दिख रहा है। ठीक है। सो एक्चुअली जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देते हैं ना, तो उस हीट का दो यूज हो रहा है, वर्क करने में भी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में भी। डन है। और जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट देते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन जीरो। सो हीट का यूज सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में हो रहा है, इसलिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट देते हो वो कम होता है। सो सीवी इज लेस because delta Q is less, and CP is greater because in that case delta Q is more, because two things are happening over there. डन है। उसके बाद है तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हमने पढ़ा। सॉरी। व्हाट आर दिस प्रोसेसेस, आइसोबारिक प्रोसेस हमने पढ़ा, आइसोकोरिक पढ़ा, ठीक है, आइसोथर्मल पढ़ा, एडियाबेटिक पढ़ा। एक एक करके दोनों सारे को देख लेते हैं शॉर्टकट में। सो आइसोबारिक का मतलब क्या होता है, आइसोबारिक का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर। सारे ही प्रोसेस में हमें एक चीज फाइंड करना है, दैट इज योर वर्क डन। ठीक है। सो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर इज द प्रोसेस, प्रोसेस चाहे जो भी हो। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, पीडीवी। ठीक है। सॉरी, इन जनरल फॉर्मूला क्या है, पीडीवी, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, प्रोसेस चाहे जो भी हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट। सो स्मॉल वर्क डन इज पीडीवी। Sorry. So let's say we are calculating total work done. So work done will be equal to what? Pressure is constant here. Pressure को आप बाहर ले सकते हो, dV. Let's say volume is changing from V1 to V2. So you can clearly write here P is V2 minus V1. So in isobaric process, work done is V2 minus P into V2 minus V1. सारे ही प्रोसेस में तुम्हें वर्क डन पता होना चाहिए, सारे ही प्रोसेस का पीवी कर्व कैसे बनाओगे वो पता होना चाहिए। सो यहाँ पे सिंस प्रेशर कांस्टेंट है, तो पीवी कर्व कैसा दिखेगा, जैसे सारे ही प्रोसेस में इक्वेशन जो वैलिड है वो है तुम्हारा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है। सो इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, तो पीवी कर्व तो कांस्टेंट प्रेशर है तो ऐसा दिखेगा, है ना, ऐसा दिखना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। अगर तुमसे वीटी कर्व यहां से पूछता है तो वीटी कर्व कैसे बना सकते हो, पी इज कांस्टेंट, सो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो स्ट्रेट लाइन। So for every process you can draw whatever graph is getting asked, है ना, निकाल सकते हो। सो दिस इज आइसोबारिक। उसके बाद है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। सो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या है, पीडी, डीवी चेंज इन वॉल्यूम, हियर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वर्क डन इज जीरो। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स। ठीक है। उसके बाद है आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है। सो अगर यहाँ पे वर्क डन की बात करो तो जनरल फॉर्मूला है पीडीवी। वी विल पुट इन वैल्यूज ऑफ पी हियर, जैसे हमने किया होगा। आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ भी ट्रू होगा सारे ही प्रोसेस में, बिकॉज दैट इज यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, राइट। whenever gas is ideal we use that whatever be the process. So p का वैल्यू यहाँ पे हम क्या रखते थे, nRT by v dv, और इसको इंटीग्रेट करते थे, then we have got work done as nRT ln v2 by v1। या इसको रिप्लेस कैसे कर सकते हो, nRT ln t1 by t2। So this is the work done in case of isothermal process. Now coming back to the graph, if you see, यहाँ पे अगर मैं बोलूं पीवी कर्व बनाओ, तो P कांस्टेंट है ना, यानी कि पीवी इज कांस्टेंट, राइट। सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो ग्राफ ऐसा होगा, राइट। डन है। उसी तरह से अगर टीवी कर्व पूछता है तो T कांस्टेंट है, वॉल्यूम से पैरेलल ग्राफ चला जाएगा। सो यू आर वाइज इनफ नाउ टू डू सच थिंग्स, करेक्ट।
नाउ कमिंग बैक टू एडियाबेटिक प्रोसेस, अभी तक मैंने बोला हर प्रोसेस का एक तो कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यहाँ पे सिस्टम सिस्टम को हीट नहीं दिया जा रहा, सिस्टम से हीट बाहर नहीं आ रहा, यानी कि हीट एक्सचेंज इज जीरो, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है। इस प्रोसेस का भी इक्वेशन है, सॉरी, हर प्रोसेस का एक इक्वेशन होता है। आइडियल गैस इक्वेशन हर प्रोसेस में ट्रू होगा, सो एडियाबेटिक के लिए भी ट्रू है। इसका एक और स्पेशल इक्वेशन है जो आप हमेशा यूज करते होगे, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। गामा का मतलब आप सबको पता है, गामा क्या होता है? सीपी बाई सीवी। ठीक है। सो दिस इज दिस। नाउ कमिंग बैक टू वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है? P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। अब अगर P1 V1 को अगर आप यहाँ पे पुट करो P1 V1, तो वो किसके बराबर होगा? NR T1। तो यहाँ से लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू T1 माइनस NR T1 माइनस T2 गामा माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू NR डेल्टा T डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। सो दिस इज द वर्क डन। अगर आप ग्राफ बनाओगे, पीवी ग्राफ इसका बनाओगे, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे पी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v का गामा। सो जब भी वाई एक्सिस के अलोंग जो है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो ग्राफ ऐसा पैराबोलिक होता है, राइट? सो दिस ग्राफ इज ऑल्सो लुकिंग लाइक दिस। सो ये सारी चीजें याद रखना। डन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हें आ सकता है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के ग्राफ का कंपैरिजन। सो अगर आप कंपैरिजन करो तो, एनीवे पहले पीवी कर्व में जाते हैं, उसके बाद कंपैरिजन करेंगे, ठीक है? देखो, पीवी कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पीवी कर्व से हमें वर्क डन का पता चलता है। जैसे वर्क डन का जनरल फॉर्मूला मैंने बताया, पीडीवी। ठीक है। सो यहाँ रख लो पी, यहाँ रख लो वी। अगर मैं बोलूं ग्राफ ऐसा है, तो इस ग्राफ के अंदर का एरिया क्या होगा? अगर तुम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो या फिर बायोलॉजी के भी स्टूडेंट हो, क्लास में मैंने कई दफा ये रिपीट किया है कि वॉट एवर, if there is something on the y axis, something on the x axis, then y dx has a meaning of area under curve. You know, right? This is area under curve. So here along y axis there is p, and along volume axis there is v. So here, sorry, so here work done will be what? It will be PdV, right? Done है. So area under PV curve with the volume axis. Always remember, it is getting taken with the volume axis. This area will indicate what? Work done when its volume is changing from V1 to V2. So area under PV curve gives us work done with volume axis. कभी कभी ग्राफ ऐसे कर देता है, इधर V दे दिया, इधर P दे दिया। अगर तुम्हारा ऐसा ग्राफ है, तो एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स यू वर्क डन, बट एरिया किससे लोगे? वॉल्यूम एक्सिस से। सो यहाँ पे ऐसे बनाओगे, ठीक है? ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? आपका वर्क डन होगा। तो वी हैव टू बी केयरफुल। ठीक है। चलो, नाउ वी विल डू द कंपैरिजन। मैंने बताया था कि पीवी कर्व मैंने दोनों में ही ड्रॉ किया है ना, एडियाबेटिक का भी ड्रॉ किया, आइसोथर्मल का भी ड्रॉ किया, दोनों में ही ऐसा ड्रॉ किया था मैंने। ठीक है। तो if I talk about isothermal, if I talk about adiabatic, इस केस में जनरल इक्वेशन we can use PV equal to nRT. Here also we can use, but यहाँ पे इसको यूज करने से हमें पीवी कर्व का ग्राफ स्लोप मिल सकता है। कैसे? टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट। सो यहाँ पे P इक्वल टू क्या है? सम कांस्टेंट K, nRT को मैं K लिख रही हूँ बाई V। सो यहाँ से dp by dv निकाल सकते हो, राइट? So if you will calculate dp by dv, we have done it this in the class, you will get minus p by v. Similarly, when you will do for the adiabatic process, dp by dv अगर करोगे, लेकिन इक्वेशन कौन सा यूज करोगे? दैट इज इंपॉर्टेंट। सो पीवी इक्वल टू एनआरटी हम नहीं यूज कर सकते। क्यों मैं यूज नहीं कर रही ये इक्वेशन? क्योंकि यहाँ पे टी कैसा है हमें नहीं पता। टी इज नॉट कांस्टेंट इन एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट? एंड if it is not constant, then we have three variables here, p, v, t. So we cannot differentiate and get dp by dv. Done, because there are three variables. So we cannot use this equation for this purpose. Done. Let's use this formula then, pv gamma equal to constant. This is also true for adiabatic. So from here you can calculate dp by dv, and that will give you minus gamma p by v. What is the difference?
you can clearly see in this case slope is minus p by v, and in this case slope is gamma times minus p by v. So adiabatic graph is more slopy and this graph is less slopy. So if in the same graph you are given two things like this, which is adiabatic, which is isothermal, तो कौन सा ज्यादा स्लोपी है, यू जस्ट नीड टू चेक विद दैट. जो ज्यादा स्लोपी होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक. ठीक है. एंड वट एवर इज लेस स्लोपी विल बी व्हाट, आइसो. सो दैट यू हैव टू चेक. नाउ वी विल डू द क्वेश्चन. So this is the very first question. We got this question in JEE Mains 2025 itself. ठीक है. So let's do some practice. Read the question carefully. Take your time. Do it. Let me. I will launch the poll. जहाँ पे तुम लोग आंसर कर सकते हो. किसी को कोई डाउट है तो भी यू कैन आस्क. Very good. I got one correct answer. That's great. One more answer if I can get. I will wait for another 20 seconds. Okay, I got answers. Thank you. थैंक यू सो मच. सो सभी ने सॉल्व किया होगा. क्वेश्चन काफी सिंपल है ना. यहाँ ग्राफ में क्या है, पीवी कर्व गिवन है. दिस इज पी, दिस इज वी, एंड ग्राफ लुक समथिंग लाइक दिस, है ना. हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि ए से बी तक का प्रोसेस क्या है. ए से बी तक एडियाबेटिक है और बी से सी तक हमारा क्या है, आइसोथर्मल. हमें बताना है नेट हीट अब्सॉर्ब पर यूनिट मोल बाय द सिस्टम. तो हीट अब्सॉर्ब पूछा है फ्रॉम ए टू सी. तो क्यू ए बी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक. डन है. हमें क्या निकालना है, इसका मतलब क्यू बी सी निकालना है. एंड बी टू सी प्रोसेस इज व्हाट, आइसोथर्मल. सो आइसोथर्मल के लिए आपने जरूर लिखा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन. सो हियर आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर इज कांस्टेंट और हमें पता है डेल्टा यू होता है एनसीवी डेल्टा टी. So if temperature is constant, means delta T is zero, this is zero, right? So QBC will be equal to what? Work done. And work done in isothermal process, just now we have learned the formula nRT ln V2 by V1. So V2 का वैल्यू क्या है, that is your 400, and V1, sorry, V2 कितना है, 8 into 10 to the power minus 6, and that is 6 into 10 to the power something. So n का वैल्यू 1 है, and this is R. Temperature is 450 Kelvin. ln v2 का value is 8 into 10 to the power minus 6, and that is how much, 6 into 10 to the power minus 6. So this will give you answer, right? This will get cancelled. So this is 450 r ln 4 by 3. ln 4 by 3 को क्या लिख सकते हो, ln 4 minus ln 3. So correct answer is this. Now do this question and let me. This came in NEET exam. So let's do this question.
Answer of this question is hidden in the formula only. फॉर्मूला को ध्यान से देखोगे, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर. यस, शुड आई डिस्कस? ओके. क्वेश्चन क्या है? वर्क डन इन एन एडियाबेटिक चेंज इन एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन ओनली. सो वर्क डन का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया था, P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1. So if gas is going from one position, that is P1V1, to another position, that is P2V2, through adiabatic process, then work done formula is this. अब देखो ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है गामा पे, जो कि कांस्टेंट होगा पर्टिकुलर गैस के लिए. वन इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज डिपेंडिंग ऑन पीवी, राइट? यहाँ पे भी पी और वी का मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ भी पी और वी का मल्टीप्लीकेशन है. तो बेसिकली चेंज इन इट्स प्रेशर उस पर डिपेंड. आई मीन द वर्क डन इन एडियाबेटिक चेंज इन एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन ओनली लिखा है. रीड द क्वेश्चन केयरफुली, यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है. सो वी कैनॉट से डिपेंड्स ओनली अपॉन प्रेशर. वी कैनॉट से, राइट? क्योंकि वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है. वी कैनॉट से इट डिपेंड्स ओनली ऑन द वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है. Now, if you convert this formula again, यहाँ से लिखो NR. So this will become T1 minus T2. P1 V1 को क्या लिख सकते हो? NR T1. P2 V2 को क्या लिख सकते हो? NR T2. So इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, गामा माइनस 1. अब ध्यान से देखो, NR बाई गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर गैस सैंपल, है ना? उसके लिए ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा. और यहाँ से देखो T1 माइनस T2. So it seems like it depends only on the temperature. So it depends on change in its temperature. So it depends on the multiplication of P and V, and that is equal to what? nRT, according to ideal gas equation. So we will say what? We will say it depends only on its change in its temperature. Done? So correct answer will be which one? B. Done it? I hope it is clear. Any doubts? Okay, great, great. I got one answer. Thank you. चलो, let's move ahead with another question. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये आईआईटी में भी एक बार आया था, ये काफी समय से आ रहा है. एंड दिस इज वन ऑफ द फेवरेट कॉन्सेप्ट आई वुड से. डन है? सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बोथ नीट एंड जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से. 2025 में आ चुका भी है. तो रीड द क्वेश्चन, ट्राई डूइंग इट.
ओके, आई गॉट वन आंसर एंड दिस इज नॉट करेक्ट। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम फॉर द गिवन साइक्लिक प्रोसेस। आपने जो आंसर दिया है ना, दैट आंसर विल बी ट्रू फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि एक पॉइंट से स्टार्ट होकर वापस वहीं आ रहा है। देन यू विल से इंटरनल एनर्जी चेंज इज जीरो, बट you cannot say heat exchange is zero. So let's discuss it. यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, यहाँ सी तक गया, ठीक है। और नहीं, इधर से नहीं जा रहा, ऐसे जा रहा है ना। यहाँ पे कुछ बी है, सो ऐसे गया सिस्टम, फिर वापस ए तक आ गया। तो A B C A ऐसा कुछ है। डन है। हमें पूछा है हीट एक्सचेंज, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑलवेज यूज दैट। जब भी तुम्हें हीट निकालना हो वर्क डन के लिए, तो हर प्रोसेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अगर ग्राफ दिया है तो एरिया अंडर कर्व से निकाल सकते हैं, है ना। अगर प्रोसेस नहीं दिया है, ग्राफ दिया है, तो एरिया अंडर कर्व से वर्क डन निकाल सकते। सो इट कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A B C A, ए से चलकर ए तक आ रहा है, तो ये टर्म तो जीरो हो गया, यानी कि हीट एक्सचेंज किसके बराबर होगा? वर्क डन। हमारे क्वेश्चन में प्रोसेस का कोई मेंशन नहीं है ना, कोई मेंशन नहीं है, तो वर्क डन का हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं। बट हमारे क्वेश्चन में ग्राफ दिया है, और किसका ग्राफ दिया है? पीवी कर्व का, पीवी ग्राफ दिया है, राइट। सो पीवी ग्राफ अगर दिया है तो वर्क डन निकाल सकते हैं, एरिया अंडर पीवी कर्व विद द वॉल्यूम एक्सिस। डन है। So whatever is the work done here will be equal to heat exchanged. Let's calculate it. अब देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या हो सकता है, इतना कुछ जानने के बाद भी मिस्टेक हो सकता है, और वो मिस्टेक क्या है? जैसे अगर अगर प्रोसेस ऐसा होता, ए से चलता, बी तक गया और एक कंप्लीट सर्कल में जाता, बी, यहाँ सी ले लो, यहाँ डी ले लो, वापस से ए पे आए, सो कंप्लीट सर्कल में जा रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? एरिया अंडर कर्व। सो एरिया अंडर कर्व क्या है यहाँ पे? अगर तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो तो लेट मी शो यू। हाफ सेमी सर्कल में जब जाएगा तो एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा? ये पूरा, ये पूरा, है ना। और ये जा रहा है ए से सी पॉइंट, बी पॉइंट तक, लेट्स से। सो जब ए से बी तक जा रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है। वॉल्यूम घटने का मतलब कॉम्प्रेशन। सो वर्क डन इज व्हाट? नेगेटिव। सो जब ए से बी गया तो वर्क डन कितना है? नेगेटिव। और कितना नेगेटिव है? जितना इस एरिया का वैल्यू होगा। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, समझ गए ना, ये वाला एरिया, ये पूरा। अगर अब वो बी से वापस ए तक आ रहा हो थ्रू अनदर सेमी सर्कुलर ट्रैक, कुछ ऐसा, तो बी से जब ए तक आया तो वर्क डन कौन सा वाला एरिया होगा? ये वाला एरिया होगा, है ना। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी को अगर मैं W1 बोलूं, एंड वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी को मैंने क्या बोला? W1। एक सेकेंड, लेट मी राइट इट प्रॉपरली। सॉरी। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, उसको मैं क्या बुला रही हूँ? W1। साइन क्या दूंगी? नेगेटिव, क्योंकि कॉम्प्रेशन हुआ है। वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, ये कितना है? W2। ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि वॉल्यूम बी से ए तक जा रहा है, यानी कि लेस से ज्यादा हो रहा है। दिस इज पीवी कर्व, राइट। सो वॉल्यूम छोटे से बड़ा हो रहा है, एक्सपेंशन है, पॉजिटिव। टोटल वर्क डन कितना होगा? इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? -W1 प्लस W2। अगर ध्यान से देखो तो मैग्नीट्यूड वाइज W1 इज ग्रेटर देन W2। सो मेरा जो टोटल वर्क डन आएगा वो क्या आने वाला है? नेगेटिव, समथिंग नेगेटिव, राइट। एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस पोर्शन, जो भी सर्कल वाला पोर्शन है ना। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब तुम्हारा अगर सर्कुलर ट्रैक हो, ऐसा ऐसे प्रोसेस घूम रहा हो, तो वर्क डन क्या होगा? इस सर्कल के एरिया के बराबर होगा। और अगर ये सर्कल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर ये सर्कल क्लॉकवाइज जाता है तो वर्क डन क्या होता? पॉजिटिव होगा। नाउ ये समझ गए। अब देखो, अब मुझे इस सर्कल का एरिया निकालना है। सबको इजीली पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है? रेडियस। तो तुम लोग यहाँ पे गलती ये कर सकते हो कि सपोज कर लो यहाँ से ये वाला रीजन, ये वाला वैल्यू निकाल ली। सो यहाँ पे वॉल्यूम कुछ और होगा, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ और होगा। डन है। हमें रेडियस पता चल गया, तो हम क्या कर देंगे फिर? पाई इंटू आर का स्क्वायर।
इससे गलती हो सकता है। जैसे मैं तुम्हें इसी प्रोसेस में गलती करके दिखाती हूँ। जैसे देखो, अगर तुम्हें वर्क डन निकालना है, यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, ये पूरा पोर्शन, क्योंकि हाफ सेमी सर्कुलर ट्रैक में गया है, वो कंप्लीट सर्कल में नहीं गया है। सो वर्क डन इज एरिया अंडर दिस पोर्शन, है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं फिर से दिखाऊं तुम्हें, ए से ए बी सी तक जब जाएगा तो वर्क डन कितना होगा, ए बी सी ये पूरा, ये पूरा। और जब सी से ए आएगा तो वर्क डन ये पूरा होगा। डन। जब ए बी सी गया वर्क डन नेगेटिव था, सी से ए गया वर्क डन पॉजिटिव था, दोनों को ऐड करोगे तो सेमी सर्कुलर ट्रैक का जो एरिया है वही वर्क डन होगा। सो अगर तुम यहाँ पे इसका एरिया निकालोगे तो तुम एरिया क्या लिखोगे, हाफ ऑफ द सर्कल। और हाफ ऑफ द सर्कल का एरिया क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर बाई टू। सो पाई बाई टू इंटू रेडियस, रेडियस क्या दिख रहा है यहाँ से देखो, ये सी ए का वैल्यू क्या है, 200, 400 माइनस 200, सो दैट इज 200 डायमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा, 100। सो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में चेंज करोगे, 10 to the power -6। सो ऐसा कुछ आ रहा है। दिस इज नॉट गिवन इन द आंसर, ये आंसर में नहीं दिया है, राइट। है कहीं मैच नहीं कर रहा, तो हम कुछ गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकते। तो तुम बोलोगे मैम एरिया ही तो निकालना है, फिर क्यों नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ध्यान से देखो, यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे है ना, वो कोई कांस्टेंट नहीं है, वो प्रेशर है जिसका सर्टेन यूनिट होता है। यहाँ पे किलो पास्कल में दिया है ये, और ये दिया है सीसी में। ठीक है। सो अगर तुम ऐसे कर रहे हो ना तो मिस्टेक कर रहे हो। हमेशा एरिया कैसे लेना है, पाई इंटू R1 इंटू R2। अब ये क्या है एरिया, देखो यहां से वॉल्यूम एक्सिस से देख लो रेडियस कितना जा रहा है। सो ये रेडियस इतना है, सॉरी डायमीटर इतना है, रेडियस कितना जा रहा है, 100। 100 इंटू 10 to the power माइनस R1 का वैल्यू क्या लिखोगे, 100 इंटू 10 to the power -6। R2 लिखो अब हमेशा, इधर से भी रेडियस को मेजर कर लो। सो इधर से अगर रेडियस को आप मेजर करोगे तो डायमीटर कितना जा रहा है, डायमीटर जा रहा है 400 माइनस 200। मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, देखो ध्यान से मैग्नीट्यूड सेम है, बट यूनिट की वजह से फर्क पड़ रहा है ना। यहाँ पे किलो पास्कल है, तो पास्कल में लिखोगे दैट इज एसआई यूनिट, सो यहाँ पे क्या लिखोगे, 10 to the power 3। सो डिफरेंस हो गया ना। अगर अगर मैं सिर्फ R1 या सिर्फ R2 को लेकर सॉल्व कर दूं तो आंसर गलत आएगा। इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तुम्हें, सर्कल दिख रहा हो, एरिया निकालना हो, पायर स्क्वायर ब्लाइंडली यूज मत करना। क्या यूज करोगे, पाई R1 इंटू R2, दैट इज ऑलवेज सजेस्टेड। सो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो पाई इंटू 100 इंटू 100, 10 to the power 4, 10 to the power -6 इंटू 10 to the power 3, 10 to the power -3। सो पूरा एरिया कितना आया, 10 पाई, पूरे सर्कल का। ये पूरा एरिया, हमें सेमी सर्कुलर का ही एरिया बताना है, वर्क डन उसी के बराबर है हमारे क्वेश्चन में। सो आंसर क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5 पाई। सो करेक्ट आंसर विल बी 5। आई होप इट इज क्लियर। मैं ये कहना चाह रही थी टोटल, इन टोटैलिटी अगर देखो तो, इफ दिस इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ सिस्टम through which it is changing its state, done है। So and you have to calculate the work done, area under circle will be the work done। So how you will calculate work done, pi R1 into R2, not pi r square। R1 R2 क्या है, दोनों एक्सिस से रेडियस को मेजर कर लो। ठीक है, ये वाला रेडियस मेजर करो और ये वाला मेजर करो। ठीक है, with proper unit, write it, then you will get the correct answer, otherwise you will end up getting wrong answer। ठीक है, uh, do this, read this question carefully and try doing it।
Take your time, do it. Okay, let's discuss it now. Given below are two statements. One is labeled assertion, another is reason. So such sort of question, I mean, come in JEE mains and also in NEET you will get, right? So let's read these two statements. In an insulated container, container is insulated means no heat can go out, no heat can come in. So this both these two scenarios are not possible, right? A gas is adiabatically shrunk, and if there is no heat transfer, naturally process becomes what? Adiabatic. Shrunk to half of its initial volume. So initially, if its volume is B, then what happens? There is gas inside and it is getting compressed adiabatically. Then what will happen? Its volume will decrease. Okay? And its volume is decreasing to what? Half. Half of its initial. So let's say now the gas is something like this. So basically you have compressed it. It will be now more crowded. Intermolecular distance between gases will what? Increase. Temperature of the gas decreases. It is same. अगर तुम लोगों को याद होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी मैंने बताया था कि व्हेन गैसेस आर आई मीन कोलाइडिंग लेस व्हेन देयर इज लेस कोलिजन देन व्हाट विल हैपन एनर्जी विल बी लेस राइट डन है एंड व्हेन देयर विल बी मोर कोलिजन I mean, when there will be more collision. Suppose there is a room and there are so many people packed inside. So what will happen? More collision will occur. And during collision, what happens? Energy exchange happens. And because of that, there will be motion. Motion meaning what? Energy. Energy meaning in terms of gases, particles, what? It means temperature is changing, right? So if energy is increasing, it means its temperature is increasing because energy is internal energy is direct function of temperature है ना हमने पढ़ा है what NCV delta T then so if temperature is increasing this internal energy will increase so here it is said insulated container gas को जब हम shrink करेंगे compress करेंगे to half of its initial volume collision will increase, energy will increase, it means temperature should increase. But here it is given temperature of gas will decrease. This cannot be true. It is false, right? Free expansion of an ideal gas is an irreversible process and an adiabatic process. It is true क्योंकि अगर आप इमेजिन करो हमने ये लास्ट चैप्टर ऑफ 11th में एक एग्जांपल मैंने दिया था लैपलेस करेक्शन में कि जो हमारा टायर होता है ना टायर अगर ऑल ऑफ सडन बर्स्ट कर जाता है तो जल्दी से वो बर्स्ट किया ठीक है उतने ही समय में हमारा क्या होता है गैस बाहर आने लगता है और जब टायर के अंदर जो गैस था वो क्या था टायर के वॉल्यूम में कंटेंट था है ना एंड द मोमेंट इट विल कम आउट इट विल एक्सपैंड विग्रसली क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा वॉल्यूम है इस एनवायरमेंट का वॉल्यूम विच इज टू बिग when it comes to comparing with the tire, right? So that volume is too big. It means when gas is escaping from this hole, what is happening? It is expanding. And this expansion will be what? This expansion will be एडियाबेटिक प्रोसेस क्योंकि ये इतना जल्दी हो रहा है ना ये प्रोसेस कि हीट ट्रांसफर के लिए कोई समय ही नहीं है सो दिस प्रोसेस इज एडियाबेटिक एंड इरिवर्सिबल क्योंकि ट्यूब से जो एयर बाहर गया है क्या उसका चांस है कि वो वापस से इस होल को सर्च कर ले और अंदर की तरफ आ जाए नहीं क्योंकि इट हैज गॉट अ लार्ज वॉल्यूम टू रोम अराउंड there is very less probability of that escaped air to find this hole again and enter into the tube this is highly improbable situation right so uh, r is what reason is what correct this is an irreversible process and adiabatic so which is correct one here third option will be correct I hope you have got it
Now read this question and try doing it. I hope you all have done it or at least gone through it. An ideal gas goes from an initial state to final state. During the process, pressure of gas increases linearly with temperature. P is linearly varying with temperature. It is given, right? So when this is possible, ideal gas equation को use करते हैं PV equal to nRT. P is equal to what? nR by V into T. So for P to be directly proportional to temperature, it's important this is constant, right? यानी कि volume is constant. So this is talking about isochoric process. Volume is what? Constant. Now let's read individual statements. Work done by gas during the process is zero. Yes, क्योंकि volume is constant. Heat added to gas is different from change in its internal energy. Let's use first law of thermodynamics. This is equal to this. Okay. So here this is zero. So heat given is equal to change in internal energy. तो यहाँ पे कह रहा है heat added to gas is different from change in its internal energy. This is false. They are same, right? Because W is zero. The volume of the gas is increased. Pressure of gas is increasing. So if pressure will increase, what will happen? The volume of the gas is increased. No, volume is constant, right? So this is wrong. Clearly wrong. No discussion. Internal energy of the gas is increased. So when pressure of gas is increasing linearly with temperature, then okay, during the process, pressure of gas is increasing. So if pressure is increasing, then temperature will also increase. Done it? Because they are linearly related. It means temperature is increasing. So internal energy is direct function of temperature. So that will also increase. So this is true. The process is isochoric. Yes, that is also true. So true statements are A, D, E. And that will give us 2 as the option. Okay? Chalo. Now let's do this question and end the discussion over here. Do it and let me know. This is also from area under PV curve का question है ना? So you can do it easily. Just 2-3 question before we discussed it widely, है ना? How to solve it and all.
Okay, let's do it. So, what is happening here? Gas is moving from A, B, C to D. We are asked what is the work done. So, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, चलो मैं इसको X ले लेती हूँ. So, A, B, C, X, A. अगर मैं इस पूरे को आई मीन ए बी सी एक्स में जो वर्क डन होगा वही ए बी सी एक्स ए में वर्क डन होगा, क्योंकि एक्स से ए आने में तो कोई वर्क डन होगा ही नहीं, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, राइट? सो वर्क डन in the process A B C X A B C X A, that is cyclic process, will be equal to work done in the process A B C X, राइट? एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? राइट नाउ आई टोल्ड यू, अगर साइक्लिक प्रोसेस हो तो वर्क डन क्या होगा, उस पर्टिकुलर ज्योमेट्री के अंदर जो भी एरिया है दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन. और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, एंड हियर इट विल बी नेगेटिव बिकॉज इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ए बी सी एक्स एंटी क्लॉकवाइज सेंस, राइट? So what will be the work done? This length is equal to 3 v naught minus 2 v naught, that is v naught, into BC will be equal to 2 P naught minus P naught, that is this, with negative sign. So work done until X is how much? Minus P naught V naught. What will be work done while moving from X to D? So from X to D, work done will be this wala area, ये पूरा area, है ना? Because that is simply from X to D, no cyclic thing, right? So that is area under this thing. This is equal to V naught and this is equal to 2P naught. Again, its volume is decreasing when we are moving from X to D. So work done from X to D is also negative, and that is how much? 2P naught V naught. So total work done, if you calculate, this is minus 3P naught V naught. So correct answer is which one? 4. Let's do this last question. After that, we will close the discussion. Okay? I hope you all have done it almost. Okay. Let's do it now. So this particular gas is following which equation? PV square is equal to constant. Okay. Then we are asked these things. So if you look at it, P and T के बारे में पूछ रहा है. ठीक है. So what we can do here? P और T के बारे में पूछ रहा है तो वॉल्यूम को चेंज कर दो. आई मीन पीवी इक्वल टू एनआरटी हर प्रोसेस में ट्रू है तो यहाँ भी ट्रू होगा. V को क्या लिख सकते हो? एनआरटी बाई पी. सो P इंटू nRT by P का square, sorry, and this is equal to C. So this is equal to nR T का square divided by P, क्योंकि एक P cancel हो जाएगा C. So here you can see T square is directly proportional to P. So if P1 is greater than P2, then T1 will be also greater than T2. Done है? लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है, so this is wrong because they are directly proportional, right? If T is increasing, P will also increase. So if P1 greater than P2 means T1 is also greater than T2. Now सेकेंड ऑप्शन को देखो, V2 और V और T की बात हुई है, यहाँ पे P और V है. सो P को T में कन्वर्ट कर दो और T और V के टर्म में कन्वर्ट कर दो. सो यहाँ से अगेन आप लिखोगे क्या? P की जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम अभी? nRT by V. सो यहाँ पे आप लिख दो nRT by V and this is into V का square and this is C. So sorry. So what we are going to get here? If you can see, साफ साफ दिख रहा होगा. This is V का square, right? So this is equal to TV.
is equal to what? Constant, if I'm not wrong. So V is inversely proportional to temperature. यानी कि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा. So if V2 is greater than V1, it means T2 has to be less than T1 because they are inversely proportional. This is correct. This is single choice question. So we have already got the answer. But if you want to check, यहाँ पे देखो V2 is greater than V1, T2 is greater than T1. No, they are inversely proportional. This cannot be true. P1 is greater than P2, V1 is greater than V2. यहाँ से अगर ध्यान से देखो इसी इक्वेशन से, तो P is inversely proportional to volume का square. If P is increasing, it means volume will decrease. So this option is also wrong. Correct answer is what? Correct answer is your two. Done it. So these were the questions we did. Tomorrow in the class we will deal questions or take questions from second law of thermodynamics. I will take you through what it is, Newton's law of cooling and everything also. From that portion also we will be doing questions. Okay. Till then, you pick up more questions from this portion and please do solve it. Thank you everyone. Take care of yourself. Bye. Stay happy and keep enjoying. Bye bye. Take care.